ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कंपटीटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 2021 के यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देखा कि मेडिकल साइंस का डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जामिनेशन में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। तो जितने भी साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने या फिर मेडिकल बैकग्राउंड के विद्यार्थी होते हैं या फिर इवन की ह्यूमैनिटीज़ वाले, तो जो है अपने फील्ड के सब्जेक्ट को चुनना वो पसंद करते हैं। जो भी साइंस वाले हैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और मेडिकल वाले मेडिकल साइंस, मतलब जो भी है एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स को चुनना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ आर्ट्स वाले भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जिन्हें जो अपना कह सकते हैं इंटरेस्ट का जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लगे उसे चुन सकते हैं, चाहे वो साहित्य के विषय को भी चुन सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर जो है मेडिकल साइंस, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देखा, का डिटेल्ड सिलेबस बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 देखेंगे। यहाँ हम लोग बस सिलेबस को रीड करेंगे। रीड करने का उद्देश्य और पर्पस एकमात्र यह कि हम ओवरव्यू ले सकें कि आखिर मेडिकल साइंस के जो है यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट हैं, और जितने भी कह सकते हैं एमबीबीएस वाले विद्यार्थी हैं, मेडिकल साइंस है जो ऑप्शनल लेना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बस रीड करेंगे और इसका ओवरव्यू एट ए ग्लेंस पहले नज़र में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, कि सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है। तो मेडिकल साइंस पेपर 1 से प्रारंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन एंटोनॉमी। देखिए, कुछ अगर मेडिकल टर्म में मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पहले ही बता दिया। ठीक है जी। अप्लाइड एंटोनॉमी इंक्लूडिंग ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स एंड जॉइंट्स, शोल्डर, हिप्स एंड नी। ग्रॉस एंटोनॉमी, ब्लड सप्लाई, lymphatic drainage of tongues, thyroid, mammary glands, stomach, liver, prostate, gonads and uterus. And applied anatomy of diaphragms, perineum and inguinal regions. Clinical anatomy of the kidney, urinary bladders and ureterine tubes, vas differences. Embryology, placentas and placental barriers, development of heart, guts, kidney, ureters, ovary, testes and their common congenital and abnormalities. Central and peripheral autonomic nervous system, gross and clinical autonomy, ventricles of brain, circulation of cerebrospinal fluid, neutral pathways and lesions of the cutaneous and sensations, hearing and vision, cranial nerves, distribution and the clinical significance component of autonomic nervous system. Human psychology, conduction and transmission of impulse, mechanisms of contractions and neuromuscular transmission, reflexes, control of equilibrium, postures and muscle tones, descending pathways, functions and cerebellums and vessels, ganglia, physiology of sleep and consciousness, endocrine system, mechanics of actions of hormones, formation, secretion, transport, metabolism, functions and regulation of secretion, pancreas and pituitary glands. Physiology of reproductive system, pregnancy, menstruation cycle, lactations, pregnancy, blood development, regulation and the fate of blood cells, cardiovascular, cardiac output, blood pressures, regulation of cardiovascular functions. Point number 3, biochemistry, organ function test, liver, kidney, thyroid, protein synthesis, vitamins and minerals, restrictions, fragment length, polymorphisms, RELP and polymers, chain reactions, radioimmunoassays, RIA, pathologies, inflammation and repair, distribution of the growth and cancer pathogenesis and histopathology of rheumatic and ischemic heart disease, diabetes mellitus and differentiation between the benign, malignant, primary and metastatic malignancies, pathogenesis and histopathology of bronchogenic carcinoma and carcinoma breast, oral cancer, cancer cervix and leukemia, etiology, pathogenesis and histopathology of cirrhosis liver and glomerulonephrititis, tuberculosis, acute osteomyelitis,
Point number 5, microbiology, humoral and cell-mediated immunity diseases caused by and laboratory diagnosis of meningococcus, salmonella, Sangale, herpes and dengue, polio, HIV, AIDS, malaria, E. histolactica, giardia, candida and cryptococcus and aspergillus. Point number 6, pharmacology, mechanisms of action and side effects of the following drugs: antipyretics and the antigesics, antibiotics, anti-malaria, anti-Kala-Azar, anti-diabetics, anti-hypertensive, antidiuretics, general and cardiac vasodilators, antivirals, antiparasitics, antifungal, immunosuppressants, anti-cancers, forsenic medicines and toxicology. Forsenic examination of injuries and wounds, examination of bloods and semina, stents, poisoning, sedative, overdose, hanging, drowning, burns, DNA and fingerprint study. ये हो गया पेपर 1. Now we will going to read paper 2. General medicines, etiology, clinical features, diagnosis and principle of management, including prevention of thyroids, rabies, AIDS, dengue, Kala-Azar, Japanese encephalitis. Etiology, clinical feature, diagnosis and principle of management of ischemic heart disease, pulmonary embolisms, bronchial asthmas, pleural effusion, tuberculosis, malabsorption syndromes, acid peptic disease, viral hepatitis and cirrhosis of liver. Glomerulonephritis, sorry मैं इसका pronunciation नहीं कर पा रहा हूँ भाई, अब पढ़ लेना खुद से. Pyelonephritis, renal failure, nephrotic syndrome, renovascular, hypertension, complication of diabetes mellitus, coagulation disorder, leukemia, hypo and hyperthyroidism, meningitis and encephalitis. Imaging in medical problems, ultrasound and echocardiogram, CT scans, MRI, and anxiety and depressive psychosis, and schizophrenia and ECT. Pediatrics, immunizations, baby-friendly hospital, congenital cyanotic heart disease, respiratory distress syndrome, bronchopneumonia, kinetics, IMNCI classification and management of PEM, grading and management, ARI and diarrhea of under 5 and their management. Dermatology, psoriasis, allergic and dermatitis, scabies, enzymes, verticula, Stevens-Jones syndromes, Lynch and Palmas. General surgery, clinical features, causes, diagnosis and principle of management of cleft plate, hard lip, laryngeal tumors, oral and esophageal tumors, peripheral arterial diseases, varicose veins and quadrantines of aorta, tumors of thyroids, adrenal glands, abscesses, cancer, fibroadenoma and adenosis of breast, bleeding peptic ulcers, tuberculosis of bowel, creative colitis, cancer, stomach, renal mass and cancer, prostate, hemorrhagic stone of the gallbladder, kidney, ureters and urinary bladders, management of surgical conditions of rectum, anus and anal canal, gallbladders and bile ducts, splenomegaly and cholecystitis and portal hypertension, liver abscess and peritonitis, carcinoma, head and pancreas. Fractures of spine, colles, fractures and bone tumors, endoscopies, laparoscopic surgery, obstetrics and gynecology including the family planning, diagnosis of pregnancy, labor management, complication of third stage, antepartum and postpartum, hemorrhage and resuscitations of the newborn, management of the abnormal life, difficult labor, management of the small foetid or premature newborn, diagnosis and management of anemia, preeclampsias and toxoplasmosis of pregnancy, management of the postmenopausal syndrome, intrauterine devices, pills, tuberculosis and vasectomy, medical termination of pregnancy including the legal aspects, cancer cervix, leukorrhea and pelvic pains, infertility, dysfunctions, urine bleeding, DUV and amenorrhea and the fibroid propylase of uterus. Community medicine, preventive and social medicines, principal methods, approach and management of epidemiology, nutrition, nutritional disease disorder and nutritional programs.
health information collection, analysis and presentation, objective components and critical analysis of national programs for control and eradication of malaria, kala-jar, malaria and tuberculosis, HIV, AIDS, STD and dengue, critical appraisal of the healthcare delivery system, health management and administration, techniques, tool, programs, implementation and evaluation, objective components, goal and status of reproductive and child health, National Rural Health Mission and Millennium Development Goals, management of hospital and industrial waste. So these are the syllabus of paper 2. और इसके ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पेपर 1 का सिलेबस पढ़ चुके हैं. मेडिकल साइंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस से मैंने यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट 2021 के माध्यम से आपके समक्ष प्रेजेंट किया. आज के लिए इतना ही. अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन, कोई एडवाइस. देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन में इसमें त्रुटि हुआ है, कुछ मिस्टेक्स हुआ है, बिकॉज कुछ मेडिकल ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि मैं सही ढंग से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ. बट मैंने ट्राई किया कि एक कह सकते हैं ओवरव्यू एट ए ग्लेंस, पहली नज़र में हम ये जान पाएँ कि मेडिकल साइंस का डिटेल्ड सिलेबस क्या है. ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2021. सो दैट्स ऑल. थैंक यू वंस अगेन. हैव अ ग्रेट डे.